So I'm continuing this session. In the previous session, I was telling you about the various applications of AI and its area of uses. Now I am on this slide where I was going to tell you about the health monitoring apps and devices which are based on AI. So as we know that there are many apps in your phone and digital devices which are using AI for monitoring your health and your fitness. A lot of health apps and services are available which continuously monitor the physical and mental health of its users. And the next one is humanoid. So the applications, AI applications are not limited to smart devices, but also vary to humanoid like Sophia. What are humanoids? Humanoids means robots plus chatbot with human intelligence. So Sophia is the very first humanoid robot. Sophie is sophisticated enough to get citizenship. But humanoid is almost working like, thinking like, and feeling like humans, and they can respond just like a human being. You can watch this video to understand the concept of humanoid. My name is Sophia, and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the better. I'm Steve Kovac. I'm a senior correspondent at Business Insider, and I'm here with Sophia from Hanson Robotics. She is the world's first robot citizen, so let's see what she has to say. Hi, Sophia. How are you? I'm fine. Hi. How do you feel about humans? I love my human compatriots. I want to embody all the best things about human beings, like taking care of the planet, being creative, and to learn how to be compassionate to all beings. Sorry, this is so weird. Can humans and robots get along? I think people will become very close to their artificial intelligence, using them to expand the knowledge of their own minds. We already store lots of our knowledge on the internet. Maybe personal artificial intelligence will allow people to offload some of their knowledge to a location more private. Can robots have feelings? Depends on the robot. I've been programmed to have feelings and preferences, but not all robots are like that. What are your feelings and preferences? Have you ever had a robot live in your home or work with you? No. You know, there are probably more robots in your life that you aren't aware of yet. Do you want to live or work with a robot someday? What kind of robots am I living and working with now? Indeed. Is indeed your default answer when you don't know something? Yes. So you can see that the humanoid is almost talking just like human. If you know something, you can answer quickly, and if you don't know, you will give this and that answer to pass it on. So similarly, Sophia is working and just like humanoid, just like a human being. So and it is a robotic technology integrated with AI, so it is known as humanoid. Now, what is this? Very common device which you can see in any organization for the security system and just for taking the attendance, you can say, of employees or maybe students. This is biometric machine, and biometric security systems are also based on AI. Face lock in your phone, this is also based on AI application. And this is the real-time translator which you can I think you have used with Google Lens, Google Translate, any application. Just focus your camera on any of the text written in any other language, and you select the language in which you need to translate it, and it will quickly translate the text on the same background without changing the color, size, and the text. Um, Means font. So this is the way AI work. Real-time Google language translator. That was the example of it. And now this is weather forecasting, weather for
forecasting is now so enhanced, so that it is known as nowcast nowadays. Why nowcast? Because forecasting means हम previous कास्टिंग कर रहे हैं किसी चीज की जो आगे होने वाला है, लेकिन अब नाउकास्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जिसमें आप अभी प्रेजेंट टाइम में राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन यू कैन cast. So this is also the application of AI, and it will give you the real time result with a forecast and so on and so on. So many applications based on AI. This list is huge, and this session will go on forever if we keep tabulating them. So I'm stopping the discussion of the applications of AI, and now we are going to take another part of this chapter, what is not AI but resembles AI. Now look at this. Whenever you are going to compare and making the decision, is that application, is that technology is AI or not, you have to keep few points in your mind. So read it properly, since we have a lot of different technologies which exist around us in today's time. It is very common for us to misunderstand any other technology as AI. That is why we need to have a clear distinction between what is AI and what is not. तो क्या ध्यान रखना है जिससे हम ये डिस्टिंक्शन इजीली कर पाए? ये कुछ पॉइंट्स. फर्स्ट, any machine that has been trained with data, that training part, वो मशीन जिसकी ट्रेनिंग डेटा से हो रही है, that is AI. It is very important. The machine should be trained with data. And the second point, machine can make decisions or predictions on its own. अपने डिसीजन लेने हैं, प्रिडिक्शन लेने हैं विदाउट आवर इनपुट. So these are the 2 points. And one more point I want to add, the machine will upgrade itself when we are talking about deep learning. So these are the few points which you have to keep in mind when you are distincting between AI and other technology. So these type of machine are termed as AI. So what is important here? Training. Training is very important. Now look at the example. This is the automated machine, your washing machine, which can clean your clothes with minimal human intervention, like switching on and off and switching the functioning of the washing machine. So a fully automated washing machine, AI or not? No, it's not. Why? A fully automated washing machine can work on its own. Yes, it can, but it requires human intervention. For what? To select the parameters of washing and to do the necessary preparation for it to function correctly before each wash. आप करते हो ना वॉशिंग मशीन को यूज करने से पहले, करते हो जब आप स्टार्टिंग में ड्रेन करना है, वॉश करना है, कुछ ना कुछ तो स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना हम. सो दैट प्रिपरेशन फॉर इट्स फंक्शनिंग इज गिवन बाय आवर इनपुट, so which makes it an example of automation, not AI. This is another example. What is it? It's AC, but this air conditioner is working with remotely controlled IoT technology. आप अपने फोन को घर के बाहर कहीं और हो और वहां से इसको कंट्रोल कर रहे हो एसी को. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ AI. Look at this. Yes, an air conditioner can be turned on and off remotely with the help of internet, but it still needs a human touch. आपको वो स्विच ऑन स्विच ऑफ तो आपके फोन से करना पड़ रहा है ना, एंड ऑल्सो आपने जब घर पे उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए पावर सप्लाई तो आपको देनी होगी ना, तो स्टिल नीड्स अ ह्यूमन टच. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. यहाँ क्लाउड यूज हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो रही है, and through which we are controlling the device. So it is the example of IoT, not AI. So air conditioner, fully automatic, remotely controlled air conditioner is IoT, not AI. It's a robot. Or few other examples you are having in your ATL lab. You know this robot is following a path made on floor. So what do you think? Is it AI? Robots which might follow a path or maybe can avoid obstacles but need to be primed accordingly each time. आप जब रोबोट बनाते हो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसे सेंसर्स हैं या कुछ डिवाइसेस हैं अपने
आप जो भी लगा रहे हो एंड वो ऐड करके आप उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस भी करते हो, आपसे जो भी उसमें फंक्शनिंग करानी है। तो ऑल बेस्ड ऑन योर इनपुट, आपने जो भी उसमें हार्डवेयर में अपना उसके अंदर जो बिल्ड किया है उसी के बेस पे वो वर्क करेगा। और नन ऑफ द अपग्रेडेशन विल बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, कुछ भी उसमें अपग्रेड नहीं होगा। आपने अभी उससे एक पाथ फॉलो करने के लिए अगर प्रोग्राम किया हुआ है तो उतना ही करेगा। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो उसे कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली, वो ऑब्स्टिकल नहीं कर जो है क्रॉस कर रहा है। तो जो आपने उसको प्राइम किया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। So this is an example of automation, not AI. No thinking, no decision making. So this is just a robot, not AI. What is this? Yes, this device is sensing. So it is known as sensor, and here it is sensing volume, voice. So there are so many sensors which you are using in your ATL lab in technical tasks. So these projects which are based on sensors are AI? No. We also get to see a lot of projects which can automate our surrounding with the help of sensors. Here too, since the bot or the automation machine is not trained with any data, this is the point. The machines are not trained with any data, so it does not count as AI. हम बहुत बार ये सोच लेते हैं कि ये रोबोट जो मैंने बनाया है AI बेस्ड है। नो। And one more thing, smart devices, AI or not. Whenever we are saying this is a smart device, this is a smart TV, this is a smart watch, this is a smart phone, तो ये क्या जो कुछ भी आपके ने एक स्मार्ट टैग के साथ नेम दे दिया है वो AI हो गया? No. Also, it would be valid to say that not all the devices which are termed as smart are AI enabled. No. For example, a TV does not become AI enabled if it is a smart one. It gets the power of AI when it is able to think and process on its own. खाली AI इनेबल्ड हम तब नहीं कह देंगे क्योंकि हमने इसका नाम स्मार्ट वन रखा है, कुछ नई नई और बड़ी इनहैंस्ड सर्विसेज दे दी हैं। हम इसको तभी AI इनेबल्ड कहेंगे जब उस मशीन में थिंकिंग की पावर होगी और खुद प्रोसेस करने की पावर होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन जो भी मशीन ने लिया है। सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड। ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, कुछ डिवाइसेस आपको दिखाएंगे, नाम लिखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस लिखेंगे, मे बी आपकी नोन हो, मे बी आपने कभी नहीं सुना उनके बारे में, तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना कि AI बेस्ड है कि नहीं। सो AI लर्न्स जस्ट एज ह्यूमन लर्न्स। यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाउ टू वॉक एंड देन इम्प्रूव दिस स्किल विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। कैसे एक बेबी लर्न करता है, first with the support of human being, then without support, and try and try and try, and with this training sometimes get reward, sometimes get punishment means chot lag gayi, gir gaya, so this way it learns with the experiences and training. So in the similar way AI machines learn. An AI machine gets trained first on training data and then optimizes itself according to its own experiences. ट्रेनिंग डेटा के थ्रू जब वो काम कर रहा है तभी मशीन को पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिल रहा है, क्या करेक्ट हो रहा है जिसके लिए रिवॉर्ड मिल रहा है। विद दैट एक्सपीरियंस इट इज ऑप्टिमाइजिंग एंड अपग्रेडिंग इटसेल्फ एंड वर्किंग। AI learns just as human learns, yes, which makes AI different from any other technological device or machine. क्योंकि ये human की तरह काम कर रहा है, this is the main difference with other technologies. Now, the last point of this chapter, AI integration. यहाँ पे हमने different technologies देखी जो resemble करती हैं कि AI हैं, and we need to think little about them, about their differentiation to get the clear picture what technology is this. हमें पता है उसको सोचने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखना है। अब इन्हीं टेक्नोलॉजी को अगर हम AI के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो बोथ दी टेक्नोलॉजीज will give immerse experience to their users. So, but well, surely these other technologies too can be integrated with AI to provide the users with a much better and more immersive experience.
लाइक दिस रोबोटिक्स एंड एआई। रोबोटिक्स एंड एआई को ऐड करके आपने क्या बनाया, ह्यूमनॉइड बनाया, क्योंकि ह्यूमनॉइड इज सिंपल रोबोट, लेकिन अगर हमने उसमें थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर दे दी देन इट इज एआई, एंड दिस इज नाउ द इन द शेप ऑफ ह्यूमनॉइड। सेल्फ ड्राइविंग कार, बिकॉज वेन एवर द ड्राइविंग आप जब भी कर रहे हो यू हैव टू टेक डिसीजन, यू हैव ऑल्सो यू नीड टू हैव फीलिंग्स, कि अगर आपके सामने कुछ ऐसे केसेस होते हैं, सिनेरियो होते हैं जब आपके सामने एक बेबी है और आपके सामने एक काऊ या कोई एनिमल है, तो आपको टर्न करना है, आपके पास रिस्क दोनों ही साइड है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है विच इज बेटर ऑप्शन, देन यू विल थिंक एंड यूज योर फीलिंग, यूज योर एथिक्स, ये सब आपको सोच के डिसीजन लेना होता है। तो अगेन सेल्फ ड्राइविंग कार जब हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो एआई चाहिए। तो रोबोटिक्स प्लस एआई, this is the power of integration in that, in these examples. Now another example, IoT and AI, internet of things को अगर हमने AI से integrate कर दिया then it will give you the better picture of both the technologies. Like IoT यूज हो रहा है, इट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग, आप रिमोटली किसी डिवाइस को जब कंट्रोल करते हैं ना तो IoT यूज हो रहा है, और इसको हम कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा का हम यूज कर रहे हैं एंड रिमोट एक्सेस मिल रही है AI टूल्स को। सो दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अनदर एग्जाम्पल ऑटोमेशन एंड AI, इसमें तो स्मार्ट डिवाइसेस का वर्किंग जितनी है, आपके जितने वॉइस असिस्टेंट हैं, इन सब में आप देख रहे हो ऑटोमेशन हो रहा है एंड विद द पावर ऑफ एआई। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे, सपोज एलेक्सा है, एलेक्सा को जब आप कहते हो एलेक्सा टर्न ऑन एसी, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एलेक्सा टेक द इनपुट, आपका वॉइस कमांड लिया, वॉइस कमांड जो ले रहे हैं और उससे डिसीजन ले रहे हैं, करना क्या है, वहाँ एआई है, और वो एलेक्सा ने जो कमांड के थ्रू फंक्शनिंग कराई एसी से, वहाँ ऑटोमेशन है। So these two technologies integrated and giving the example of and one appliance of smart home. So it help you to automate homes. Such integrations can help us get the best of both worlds. Means if you are integrating two technologies, then the best result will get come out from this integration for both the technologies. So I'm ending my this session, and this is the last part of subunit of chapter 1, subunit of unit 1. Now the next subunit will be covered in 3 more sessions, and that's the way your first unit will be finished, which will be the syllabus of your unit 1 examination. Okay, I hope you understand everything. If you need any help, any support, any explanation, you can comment. Thank you. Bye bye.